जो प्रश्न पूछा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए फार्माकोविजिलेंस के लिए है, लेकिन यहाँ जो बेसिक प्रश्न है वो भारतीय जनऔषधि परियोजना पर है, जनऔषधि केंद्र पर है। लेकिन भी मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। आवश्यक है कि सभी में फार्माकोविजिलेंस होना चाहिए, आयुर्वेद में भी होना चाहिए और उसके लिए भी सरकार निश्चित रूप पर कार्यरत है। लेकिन देश में हर नागरिक को सस्ती दवाएं मिले और मोदी सरकार की रीति नीति और कार्य पद्धति रही है। मोदी जी ने कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचा है, टोटल में सोचा है। और एक समय था, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई कहते थे कि हमें एक हॉस्पिटल दे दो, तो उसको हॉस्पिटल दे दी जाती थी। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टोटल अप्रोच के साथ मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को देखा और ये लक्ष्य पर आगे बढ़े। हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज देश में कार्यरत है। वैसे ही जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाते हैं तो वहाँ डॉक्टर चाहिए। तो मोदी गवर्नमेंट ने देश में MBBS की सीट डबल करी। पहले 350 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज हो गई। देश में 1,07,000 MBBS की सीट हो गई, PG की सीट भी डबल हो गई, ताकि देश के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो। डॉक्टर उपलब्ध हो गए और लोगों को सस्ती दवाएं कैसे, सस्ती ट्रीटमेंट कैसे मिले, अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे उपलब्ध हो। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने ओबामा केयर करके अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और ओबामा केयर योजना के रूप में सारे दुनिया में पॉपुलर हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 12 करोड़, मैं आऊंगा क्वेश्चंस के रिप्लाई पर आऊंगा। 12 करोड़ इंपोर्टेंट माहिती आपको मिल रही है, क्या दिक्कत है उसमें? आपका ये क्वेश्चंस का रिप्लाई तो मैं पहले ही दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही साकेत गोखले, देश में 12 करोड़। You need to behave. Take your seat. The member is capable of asking questions. सर, Please take your seat. देश में Don't be indecorous. 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देके देश में 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को दी है। वैसे ही देश के गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिले और बिना दवाई से कोई परिवार में कोई सदस्य के यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए देश में 10,500 से अधिक जनऔषधि केंद्र चलाया जा रहा है ताकि देश में गरीबों को सस्ती दवाएं मिले। वैसे ही मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन हो और क्वालिटी मेडिसिन के लिए विजिलेंस सिस्टम हो, आयुर्वेद के लिए भी हो और एलोपैथिक के लिए भी हो। दोनों मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन मिले और डेटाबेस, उसके लिए डेटा क्रिएट हो, डेटा के आधार पर उसकी एफिकेसी तय की जाए और एफिकेसी के आधार पर उसका उपयोग हो, उसके लिए भारत सरकार ने सुनिश्चित करा है और ये कंटिन्यू चलती प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूस होती रहती है। हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे। श्री विनोय विश्वम। Thank you, sir. Sir, my question is related to Kottakkal Ayurvedashala. As the whole nation knows, it is the number one in the research and treatment of Ayurveda medicines in the country. Sir, I ask the government, will the government be ready to take the experience and the traditions of that Vedashala and its experience and experiments in the country for the use for the growth and development of the medical treatment in this branch of medicine for the whole nation as a whole? Thank you. Honorable Minister. तो प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के हिसाब में है, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन का बारे में बात कर रहे हैं, तो संबंधित विषय उनको पहुंचा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 श्री विप्लव कुमार देव। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1 श्री विप्लव कुमार देव। माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें एक समय देश में एक ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि दिल्ली में होती थी,
और अटल जी के समय से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद अब तक 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में दी गई है। इसमें 16 ऑपरेशनल है और 6 फुल्ली ऑपरेशनल है। मुझे मंत्री जी से पूछना है, ये जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली है, इसमें एक समय बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में मरीज आते थे, उसका लोड बहुत बड़े मात्रा में होते थे, जिसके कारण से बड़े बड़े ऑपरेशन में लंबे समय टाइम लगता था। क्या सरकार के पास ये तथ्य है, ये जो अभी बिहार में ऑपरेशनल है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ऋषिकेश में भी ऑपरेशनल है नियर बाई दोनों, ये दोनों होने के बाद दिल्ली स्थित जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इसमें पहले से लोड कमा है क्या नहीं मरीज का? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे माननीय पूर्व सीएम रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने किया है। पहली बात तो मैं कहूँ कि दिल्ली एम्स के बाद जो एम्स गुवाहाटी के बारे में आपने भी किया है सवाल, तो देश को पहला, नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स मिला जो अप्रूव हुआ 2017 में। और उसके साथ जो 22 एम्स की बात कही, बिल्कुल हमारे लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि एक एम्स के बाद हम 22 का अप्रूवल देके उसमें 6 फंक्शनल फुल्ली होके 16 एम्स में भी एक्टिविटी जैसे लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च शुरू हुआ है। आपका कहना है कि क्या दिल्ली एम्स के बाद जो बन रहे हैं, फुल्ली फंक्शनल हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको आदरणीय चेयरमैन सर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट जो थे, एक छोटा मैंने जो डेटा देखा कि जो सिंस 2019 ओपीडी जब दिल्ली एम्स में हमारी रहती थी अराउंड 66 लाख, तो वो एम्स शुरू होने के बाद जो आपने कहा ऋषिकेश के बाद, तो ऋषिकेश में वही डेटा देख रहे हैं, तो वो लगभग आए हैं ओपीडी नंबर 26 लाख। तो इतने पेशेंट ने ओपीडी का बेस पे सर्विस लिया ऋषिकेश में। वैसे ही देखा जाए पटना को, तो पटना को भी ओपीडी हुआ है 29 लाख। तो इतने पेशेंट वही के वही एम्स होने के फंक्शनल फुल्ली होने के बाद इतने पेशेंट वहीं पे ओपीडी आईपीडी का फैसिलिटी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही दिशा में स्ट्रेंथन किया है हेल्थ सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। और एम्स का हमारा विशेषता यही है कि टर्शरी लेवल को हम उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री विप्लव कुमार देव। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो राज्य है त्रिपुरा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ है। त्रिपुरा सरकार के तरफ से भी समय समय पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप और पत्राचार हुआ है। क्या सरकार के अगले कोई बजट में त्रिपुरा के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिलाने की कोई योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन सर, एम्स के दिशा में लगातार हर एक को लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में एम्स बने, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस, इतने सारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स और एक अच्छी सुविधा। तो बिल्कुल आपने माननीय सांसद महोदय का कहना है त्रिपुरा के बारे में, लेकिन मैं जहां तक कह रही हूं कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट को एक अलग डिपार्टमेंट भी पहली बार मिला है, उसमें सभी विभागों से बजट भी जा रहा है। तो सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सदन को कि जैसे मैंने कहा कि पहला नॉर्थ ईस्ट को एम्स असम गुवाहाटी मिला, वैसे ही पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड को भी मिला, हमारी सरकार ने दिया। पहला मेडिकल कॉलेज मिजोरम में भी दिया। और सर, मैं अभी सिक्किम होके आई तो उन लोगों ने भी धन्यवाद दिया कि पहला गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सिक्किम को मिल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तो प्रायोरिटी है, लेकिन जो आपने त्रिपुरा के
बारे में सोचा है, तो बिल्कुल आपने पत्राचार भी किए थे और उसके आधार पर वहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के लिए फेज 3 में हमने अप्रूव किया है बजट 150 करोड़, तो उसका काम सर जारी है। डॉक्टर केसी नो श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, Chairman. First of all, by the answer by the Honorable Minister, there are 22 All India Institute of Medical Science in this country. Last so many years, there are commitments from the Government of India that they are going to institute AIIMS in the state of Kerala, which is not going to fulfill so far. Now the term of the government is already coming to an end. 6 years before itself, Honorable Union Health Minister promised in the floor of the House, next year we are going to give the AIIMS to the state of Kerala. Whether the minister is aware of that promises, a commitment, what is the answer regarding the All India Institute of Medical Science to be instituted in Kerala state? Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, हम कभी वादा खिलाफी करने वाले लोग नहीं हैं। शिलान्यास भी हम करते हैं और लोकार्पण भी हम करते हैं। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तब डिपार्टमेंट वाइज एक ही रेलवे में 2000 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसका शिलान्यास हुआ था, कभी लोकार्पण हुआ ही नहीं था। माई सेल्फ इज फर्टिलाइजर मिनिस्टर। मैं थोड़े दिन पहले कोरबा में गया था। 1971 में फर्टिलाइजर का प्लांट शिलान्यास हुआ था, आज तक उसका लोकार्पण हुआ ही नहीं, 2023 तक। माननीय चेयरमैन साहब, हमने देश में देश में 22 एम्स बनाई है। देश के सभी राज्यों में देश के सभी नागरिकों के लिए हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध हो, हमारी प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी के आधार पर हम 22 एम्स तक पहुंचे हैं। भविष्य में हम हमारा असेसमेंट के आधार पर उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, हमारी बहुत क्लैरिटी है और इसलिए हमने केरला में केरला की सरकार के द्वारा असहयोग होने के बावजूद भी भारत सरकार की हेल्थ की कोई योजना का वहां भारत सरकार के फॉर्मेट के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते होने के बावजूद भी हमने 4 मेडिकल कॉलेज केरला को दिया है। हम स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा सहयोग करते हैं और भविष्य में केरला के लोगों को टर्शरी केयर के लिए जो भी फैसिलिटी की आवश्यकता हो, मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी की आवश्यकता हो, नई मेडिकल सीटें बढ़ानी है, भारत सरकार। Honorable Minister, the honorable member wants a specific response. Once, please. I'm here. Yes. चेयरमैन साहब, मैंने स्पेसिफिक ही रिप्लाई दिया है कि हम भविष्य में जिस स्टेट में एम्स नहीं है उसके पर हम प्रायोरिटी के आधार पर विचार कर सकते हैं। Dr. Shantanu Sen. Dr. Shantanu Sen. To some states. Dr. Shantanu Sen. Kerala is a model. Dr. Shantanu Sen. You have penalized the Kerala. Ask your supplementary, Dr. Shantanu. Thank you, respected Chair. Chair, it's really very good to learn, especially for publicity purpose. Your supplementary, sir. I am coming to the question. Come. Prior to the parliament election, that so many AIIMSs are coming up, like the mastering of medical colleges. To you, my supplementary question to my learned minister is, sir, as a medical professional and as a member of Parliamentary Health Standing Committee, Dr. Shantanu Sen, please, your supplementary. I am coming to the question, sir. While visiting several AIIMS in different parts of the country, we have seen the infrastructures of those AIIMSs are far behind from what it is supposed to be. Yes. There is acute shortage of medical faculties, clinical staffs and non-clinical Supplementary. staff. If you come to our state of West Bengal, there is one AIIMS which is suffering from acute crisis and shortage of staff, sir. Sir, my question to my minister is, why, like Madam Mamata Banerjee in our state of West Bengal, who in one hand developing the medical colleges and coming up with the several medical colleges. You said publicity, you are at it now. Infrastructures. Why my minister and my department Honorable Minister. does not prioritize the development of infrastructure? चेयरमैन सर, संत मुझे आई एम गिविंग रिप्लाई। चेयरमैन सर, उसकी बात सही है
उनकी बात सही है कि कई एम्स में, कई मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी है, हम स्वीकार करते हैं। सवाल ये है कि वर्तमान समय में हेल्थ सेक्टर में जो कमियां थी, हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाई। सडन 10 साल में मेडिकल कॉलेज डबल कर दी। 10 साल में 22 एम्स बनाई। इतना बड़ा हेल्थ फैसिलिटी जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तब थोड़ी सी फैकल्टी की भी दिक्कत हो, थोड़ी सी मेडिकल स्टाफ की भी दिक्कत हो, स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे सीट बढ़ी है, वैसे वैसे फैकल्टी उपलब्ध हो रही है। और इतना बड़ा सेटअप और इतना बड़ा एम जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो 15,000 करोड़ रुपीस के खर्च से बन रहा हो, क्या आज हम बनाए और 24 आवर्स में तुरंत ही आप अपेक्षा रखेंगे कि सारी फैसिलिटी तभी पूरी हो जाए? आप तो डॉक्टर है, सम्मानीय डॉक्टर होने के नाते आप भली बात ही समझते हैं कि कोई बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हम खड़ा करते हैं, धीरे धीरे अपग्रेड करके मूल स्थिति में आता है। मैं अपेक्षा करता हूं माननीय सभी सांसद गण ने जिसके स्टेट में या तो जिसके लोकसभा क्षेत्र में इस टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप विजिट करते रहिए। आप डॉक्टर है तो मार्गदर्शन करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। भारत सरकार उसको हर संभव इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं रहने देगी, ताकि भविष्य में एक बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट हो और देश के और जनता के लिए उपयोगी हो। श्री संदीप कुमार पाठक। श्री संदीप कुमार। थैंक यू ऑनरेबल चेयर सर। सर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ऑब्जर्वेशन और एक बड़ा सीधा सा सवाल है। सर मेरा जो अनुभव है कि एम्स बहुत सारे खुले हैं देश में, वेलकम स्टेप है, लेकिन कोई भी एम्स क्योंकि फुल्ली तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, और एम्स का पर्पस ही था कॉम्प्लिकेटेड डिसीज और उसको क्योर करने के लिए, तो कोई भी एम्स जिस पर्पस से तैयार किया था वो कैटर नहीं कर पा रही है, तो अल्टीमेटली दिल्ली पे ही क्राउड हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सारे एम्स को स्टार्ट करके एक एक डिपार्टमेंट्स को डेवलप करने में 10 साल लगाने के बजाय शुडंट वी फोकस ऑन कपल ऑफ एम्स और उसको फुल्ली फंक्शनल करके फिर वी मूव ऑन टू देम? दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। चेयरमैन सर, पहली एम्स पर बर्डन बढ़ना और दूसरी एम्स में पेशेंट को आना चालू होना, पेशेंट बढ़ना धीरे धीरे चल रही एक प्रैक्टिस है, व्यवस्था है। आपने जो कहा है कि एक एम्स को फुल फंक्शनल करके दूसरे एम्स को चालू करें, जी नहीं, सभी एम्स को चालू करना है, सभी एम्स में फैसिलिटी बढ़ाते जाना है, सभी एम्स में सुविधाएं उपलब्ध कराते जाना है। कोई एम्स बनते अभी हम उसमें भी एक एम्स बन रही है, उसमें किस किस टाइप के मेडिकल डिवाइस चाहिए, कैसे इक्विपमेंट चाहिए, उसको 2 साल पहले ही असेसमेंट करके उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तब जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे तब तक उसमें इक्विपमेंट भी आना चालू हो। डे बाय डे देश का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बर्डन भी बढ़ रहा है। उसके साथ हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को इनेबलर करके एम्स की फैसिलिटी को अच्छी तरह से कैसे चले। फॉर एग्जाम्पल माननीय चेयरमैन सर, आज एक सामान्य किसी को सामान्य बीमारी है, बात सही है, आपने कहा कि टर्शरी केयर के लिए हमने एम्स बनाई है और सामान्य डिसीज के लिए भी पेशेंट एम्स में चले जाते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी होने के नाते हम किसी को मना नहीं कर सकते और मना करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सारी एम्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ के किसी को कोई भी एम्स की अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई एम्स में जाना है, तो वो पहले से एक जगह पे ऑनलाइन रजिस्ट्री कराए और वहां से उसको कमांड मिले। कोई पटना के या तो कोई बिहार के पेशेंट ने एम्स में ट्रीटमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, तो तुरंत ही उसको कमांड मिलेगा कि आपके नजदीक पटना में एम्स है, वहाँ इतने बेड खाली है और वहाँ आप वहाँ जाइए, वहाँ एडमिशन लीजिए या तो वहाँ ऑपरेशन कराइए, ताकि एक सेंट्रल दिल्ली पर बर्डन ना आए। सभी एम्स में टर्शरी केयर फैसिलिटी उपलब्ध हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डे बाय डे हम एम्स में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। Honorable members, one second. Honorable members, one second. Honorable members, we have a custom of having 5 supplementaries on a question. Since the matter is connected to health, lot many members have shown interest. I'll be open to a discussion if a suggestion will come forth. Question number 34, Professor Manoj Kumar Jha. Not present. Honorable Minister. Okay.
Shri Saket Gokhale. Question number 34. Thank you so much, sir. Sir, several Ayush wellness centers have been opened by the government across hospitals in India. These centers offer alternative treatments, including homeopathy. So there is a huge body of global documented and peer-reviewed work across decades, which shows that there are no results showing that homeopathy is a legitimate form of medicinal treatment. In fact, it is quackery. So, sir, several countries have even banned homeopathy. So on what basis is a quack and untested treatment like homeopathy being promoted in Ayush wellness centers in hospitals over modern science-based medicines across India? Honorable Minister. Respected Chairman, sir, Ministry of Ayush launched centrally sponsored scheme, National Ayush Mission on 15th September 2014 for implementation to the state's duty and for the common people to provide cost-effective and equitable Ayush healthcare, strengthening preventive and promotive aspect in primary healthcare and holistic wellness model, and improve Ayush Educational Institute for imparting quality education. But success story of Ayush Health and Wellness Center, in Ayush Health and Wellness Center, all the system of the Ayush, Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha, Suaripa, treatment given to the patients, and success story suggests that the Ayush Health and Wellness Center are providing holistic wellness model on Ayush principle and practice, focusing on preventive, promotive, curative, rehabilitative healthcare by establishing integrity with existing public healthcare system. As reported by State's UT, footfall on the beneficiary has been increased at the dispensary, which have been upgraded as a Ayush Health and Wellness Center to avail different type of facilities like OPD related services, yoga related activity, prakriti, parikshan related activity, counseling, screening, education about preventive aspect of etc., including homeopathy. Some of the states UT are also providing panchkarma related procedure like Ayush Health in Ayush Health and Wellness Center, and these Ayush and Health Center orientation is also being provided about importance of medicine plant in different type of the component. So all Ayush treatment is beneficial. All the pathies of the Ayush is really beneficial to the patient. Thank you, sir. Shri Niranjan Bist. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओडिशा में गंधमार्दन पर्वत है जहां 12,000 से ज़्यादा जीवन रक्षाकारी हर्बल मेडिसिन, लाइफ सेविंग हर्बल मेडिसिन मौजूद है और बहुत सारे कंपनी और लोकल वैद्यों को लगा के सरकार के बिना परमिशन से वो लाइफ सेविंग हर्बल मेडिसिन को ले जाते हैं। तो क्या हमारे आयुष मंत्रालय उसका प्रिजर्वेशन के लिए और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए उस गंधमार्दन पर्वत का लाइफ सेविंग हर्बल मेडिसिन का माननीय मंत्री जी उसका सदुपयोग करेंगे या उसका प्रिजर्वेशन करेंगे? थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, पूरे भारत देश में आयुष की जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी तरह से फैली और ये हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही जड़ी बूटियों का यूज़ करके लोगों को ठीक ठाक करते थे और उसके बारे में नॉलेज भी दिया जाता था। और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए ये जो कुछ जो हर्ब से जो प्लांट है उसका रिसर्च, इसका सर्वे किया जाता है और जो कुछ है आपकी स्टेट की ओर से प्रपोजल आप हमें भेजना कि आपकी जो कुछ आपके ओडिशा में जो कुछ जो जड़ी बूटियाँ है इसके बारे में हम उसको स्टडी करवाएंगे और उसको जो कुछ देश के लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आयुष चिकित्सा पद्धति भारत की बड़ी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और मान्यवर आज से नहीं, हमारे काफ़ी पहले से आयुष चिकित्सा पद्धति पर भारतीय जनमानस का बहुत भरोसा रहा है, विश्वास रहा है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि जो आयुष चिकित्सा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह नहीं है,
लेकिन जो दवाएं हमारी बन रही हैं आयुष की दवाएं, उनकी गुणवत्ता उस कोट की न होने के कारण उतनी प्रभावी नहीं होती। क्या माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूँगा कि आयुष की दवाओं के जो हमारी निर्मात्री जो भी फार्मेसीज हैं, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा में सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है ताकि हमारी आयुष की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर स्थापित हो सके और हमारी दवाओं का लाभ सारी दुनिया उठा सके। माननीय मंत्री जी। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि आयुष की जो मेडिसिन है उसकी गुणवत्ता के बारे में। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंतर्गत उसका पूरा अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और जो फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया है, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक, उसके प्रमाण अनुसार है, प्लस WHO के जो प्रमाण है उसके अनुसार सब आयुष मेडिसिन का उत्पादन किया जाता है, जिससे सब लोगों को ये अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिले। थैंक यू सर। Question number 35, Dr. M. Thambidurai. Question number 35, sir. Honorable Minister. The table. Supplementary 1, Dr. M. Thambidurai. Sir, I want to know from you, sir, whether a Honorable Minister aware, as per the data released by National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation, the inflation rate is very high during the 4 months, and also the price rose steep for vegetables at 27.6%, pulses 20.7%, spices at 19.7%, and fruits at 11% retail price. Whether the minister knows all this, any steps has taken for that. Honorable Minister. Sir, actually the prices have started coming down and it is well within the tolerance band. Lots of steps have been taken by the government, particularly for meeting the shortage in supply of perishable goods. If you would indulge me a minute, I would just explain in 1 or 2 cases the details to which we have taken steps, and that will be applicable for many others which I will not elaborate so that I don't take the valuable time of the House. So for instance, sir, reasons, of course, I'll start with. 1, we don't grow enough of pulses in this country. So pulses prices are normally because of the shortfall in supply, for which, in anticipation, depending on the crop estimates, we start tying up for imports. Now, tuvar dal, sir, has to be imported mainly from Mozambique, Myanmar, Tanzania, Sudan and Malawi, and also Kenya and Nigeria to some extent. We have imported 8.79 lakh metric tons of tuvar in the calendar year 2023. So the moment these come, we literally release them in the market, and of course the traders are the ones with permits who import them and also market them. Similarly for masoor, 15.14 lakh metric tons of masoor have also been imported, and this is again calendar year 2023. So similarly for urad, I'll come to talking about onions, sir. 25 kgs at 25 rupees per kg, onions have been ready to release. The total release will be available as of 3rd February 2024. We have released 3.96 lakh metric tons of onions in the market at that price of 25 rupees per kg. Now, import restrictions have also been made so that India-grown onions, well, it does mean a certain kind of implication on the farmer because he gets better price selling outside, but because we want onions to be available in India, we have curtailed their exports so that the prices can be kept within a reasonable limit. Similarly, I did tell about the dal. We've also got a branded Bharat dal through which chenna is made available at 60 rupees per kg for 1 kg packs.
of 55 rupees per kg for 30 kg packs. So literally 2.97 lakh metric tons of chana have been sold already by 31st January 2024 at that price, and which is therefore an effort as a result of the effort that we've taken. And these Bharat Dal, branded dal, which is coming at a concessional price, is available on ONDC, in Blinkit, JioMart, and all other big retail outlets. So such steps have been taken for tomatoes and others as well. So not only is the government seized, as the honourable member is saying, of the difficulties which arise due to perishable or commodities which are not grown in India, a committee sits, reviews periodically, and efforts have shown result on the ground that the inflation level is now within the tolerable band. Dr. M. Thambidurai. Thank you very much for the minister's reply, sir. The another thing, reasons for the retail price is the price of the diesel and petrol. Government is taking, central government reducing the price. I want to know from Honorable Minister whether this government is directing like state governments like Tamil Nadu, which promised in the election to reduce the price, not yet reduce the petrol VAT price. Whether the government will aware and direct the Tamil Nadu government, which promised the election manifesto to Honorable Minister. Further. That is I want to know. Sir, the Honourable Member has raised a very important question, sir. I'll just go back for a minute to say how the central government has reduced the central excise duty on petrol and diesel by 5 rupees per litre and 10 rupees per litre, respectively, in November 2021. And again in May 2022, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 8 rupees per litre and 6 rupees per litre, respectively. Over and above this, for cooking gas, 300 rupees subsidy is being given on the 14.2 kg cylinder for up to 12 refills that people might take. For all 12 refills, this is being given. So central government is constantly taking steps to make sure that we give the necessary subsidy, we reduce the price where it is possible, and therefore to reduce the burden on the common citizen. As for the state governments, sir, we can only request that all the country, all citizens be treated equally, and therefore such a reduction be taken up by the respective state governments. But it gets reflected in the fact that the inflation within that state remains high because of not reducing such prices where it is possible for state governments and the central government to reduce. At best, we can only, with such voices, there are a few states who have not done it, their citizens bear the brunt, and that has to be made very publicly aware. Sri Praful Patel. Retail inflation has been largely kept in check in the last many years, and I must compliment the Honourable Finance Minister and the government for having maintained a reasonable degree of inflation levels commensurate to the rising income levels of people in the country. But there are a few items sometimes which become very sensitive, and she just was replying to my colleague's question about onions. I must also say that onions have always been like a very sensitive and a politically touchy subject, because at times the prices really come down because of overproduction. Sometimes it's the other way around because of shortages. The prices go the other way around, and the farmers usually react very, I would say aggressively compared to many other crops. My request to the Honourable Finance Minister is that there are some countries where there are, onion grower, I would say, it's not like a cooperative, but they are like organizations which monitor, and nowadays we have much more access to scientific data where we can monitor the production levels as well as, the kind of crop patterns which will be over a period of time, sowing and so on. So if we can find a much more stable mechanism, you are buying through NAFED and other organizations to stabilize the prices for the farmers. Sometimes we have exports of onions which we suddenly ban, suddenly we allow exports. This kind of uncertainty
creates this kind of a situation. May I ask the Minister whether she has any thoughts on this? Honorable Minister. Presently, we have only steps which are being taken so that the preservation of very highly perishable commodities like onion can be bettered. So using gamma rays on which the BRC is working, Baba Atomic Research Center is working with government, so that we are able to, I don't know if I'm using the right expression, dehumidify it, remove the humidity content in it by using gamma rays, and then give it a longer shelf life. So steps like this are being considered. I'm not sure whether there's any attempt to have a exchange of ideas between the different federations or organizations of onion growers that may exist in different countries. I'm not very sure on that, but fact remains that efforts for giving a longer shelf life is being taken care of. And even as I gave the answer to Honorable Member Tambidurai, the concern of onion growers as opposed to the concern of onion consumers has always been a very fragile, if I may say so, or a very delicate issue, because the moment you keep the consideration of the consumer in mind, the farmers do have a problem, because exports do fetch good price. I'm conscious of that. But Honorable Minister is favorable to consideration of the idea? Well, a very valuable suggestion, sir. I'll certainly take it on and pass it to the concerned minister. Srimati Sulata Dev. थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, अगर हमारे देश में वन नेशन वन जीएसटी का प्रचलन हो रहा है तो फिर वन नेशन वन इनकम टैक्स का प्रचलन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ओल्ड रीजन और न्यू रीजन का जो कन्फ्यूजन है वो 3 करोड़ 4 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, फिर भी वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसको सरलीकरण कब किया जाए? अगर कोई व्यवस्था है कि ट्रांजिट पीरियड तो 3 साल हो गया, 1 साल 2 साल में हो जाता है, मगर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर कोई ऐसा प्रावधान है कि ये इसको भी वन नेशन और वन इनकम टैक्स में ला सकते हैं क्या? अगर है तो बताइए प्लीज। नमस्ते। Honorable Minister, beyond technical aspect. I know, sir, but the question, of course, pertains to inflation and so on. But certainly the issue that the Honourable Member is raising, that if we could do it for indirect taxes, why not for direct taxes, is a worthy issue on which I'm willing to debate anytime she and you would want me to come and talk about it now. Dr. Fozia Khan. In the current scenario, I would like to ask the Honourable Minister, with e-commerce gaining momentum and retail inflation showing rise, is the government considering technologically aligned solutions to access the impact of these services? How does the government plan to navigate the fluctuations in retail inflation concerning these emerging e-commerce trends of higher shift and more reliance of these services in the urban setup? Honourable Minister. So pardon me, sir, can I have the question repeated? Fozia Khan. Ma'am, I'm talking about technologically aligned solutions to e-commerce, considering the rising trends in inflation. So does the government plan to navigate the fluctuations in retail inflation concerning these emerging e-commerce trends? It's a very pertinent question, so much for the process of monitoring inflation. The discussion pertains to inflation and the brunt being borne by the consumers and the brunt being borne by the farmers, particularly in the case of onions, as we spoke about, because the price affects one the one way, the other way. But certainly the process of monitoring inflation and the basket, and within the basket the items and their weightages, are issues which are being discussed not just for the e-commerce or the technology digital-driven prices, but the components which go into items which constitute the CPI basket or which constitute the WPI basket. And each item's weightage within that basket are things which have to be discussed in the Ministry of Program and Statistics and Program Implementation, MOSPI as it is briefly referred to.
It's a very critical question, sir, but I'm sure the MOSPI will be seized of it. Question number 36, Shri Shakti Singh Gohil, not present. Honorable Minister. पोर्टल पर रखा दिया सर। श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरौनी में जो फर्टिलाइजर की कंपनी है, क्या उसमें नैनो उत्पादन के लिए व्यवस्था की जाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, अभी तक तो ऐसा कोई वहां पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया किया है सर। क्वेश्चन आवर ओवर। की है सर। Motion for suspension of Rule 17, Shri Prahlad Joshi, to move the following motion: that the House do suspend the provisions of Rule 17 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States Rajya Sabha in its application to the motion for consideration and passing of 1. The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, 2. The Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, 3. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 by the House. Honorable Minister. Sir, with your permission, I raise to move the following motion. That this House do suspend the provisions of the Rule 17 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of State Rajya Sabha in its application to the motion for consideration and passing of the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 by the House. Motion moved. Those in favor will please say ayes. Those against will please say noes. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Shri Arjun Munda to move the motion for consideration of the following bills. A. The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, and B. The Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2024. माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को विचार में लाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा राज्य के 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी, जिनका अभी तक जनजातीय श्रेणी में समावेश नहीं हो पाया था, ऐसे 3 समुदाय बोंडो पोरोजा, खोंड पोरोजा, कोंडा सवरा को जनजातीय समुदाय में शामिल करने हेतु, और बी उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 के विचारार्थ इस विधेयक के जरिए उड़ीसा राज्य में रहने वाले कई ऐसे समुदाय जो आज़ादी के इतने लंबे कालखंड के उपरांत भी अपनी पहचान जनजातीय समुदाय के रूप में नहीं बना पाए, उनके समावेश का प्रस्ताव है। अभी यह चर्चा के बाद में मैं इस संबंध में पूरी जानकारी सदन को दूंगा। Motion moved. Motion for consideration of the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024 and the Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2024 are now open for discussion. I shall now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr.
Shantanu Sen, not present. Dr. K. Lakshman, 10 minutes. Thank you, Chairman, sir. वो चलेगा बाद में. That is why rule has been relaxed. Sir, you were gainfully engaged in interacting with the honorable leader of the opposition when the issue was being addressed. Please, Dr. Lakshman. Thank you, sir. I stand here in support of this two bills proposed by our Honorable Minister Sri Arjun Munda ji. The bill pertaining to Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024, Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024. सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि समाज के अंदर जो भी छोटे-छोटे समुदाय जो है, पहली बार सरकार ने इतना महत्व और ऐतिहासिक निर्णय लेकर इस शेड्यूल ट्राइब में जोड़ना, इतिहास के अंदर जो स्वतंत्र सेनानी और अंग्रेजी के खिलाफ ऐसे समुदाय जो लड़े हैं, उनका आज 75 साल के बाद उनको आज हमारे सरकार ने महत्व देना है। इतना ही नहीं, पूरा देश के अंदर लगभग 75 साल के आज़ादी के अंदर जिन वर्गों का जो इतिहास में गौरव नहीं दिया गया, वैसे लोगों का भी सम्मान और गौरव बढ़ाना। To bring these communities into mainstream line, the government has taken many steps and measures for their upliftment and empowerment, and also due recognition has been given to these communities. जैसे मुर्मू समाज जो है, अंग्रेजी के खिलाफ स्वतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़े, हजारों संख्या में वो हमारे जान अर्पित किए, पर कोई सरकार ने उनका मान्यता नहीं दिया गया था। हजारों संख्या में हमारे देश के स्वतंत्र के लिए जो लड़े ऐसे आदिवासी समुदाय, ये मुर्मू समाज, पहली बार 75 साल के अंदर मोदी जी ने एक आदिवासी महिला के नाते मुर्मू समाज से जो आई है, हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना, ये इतना मान्यता देना जो आज हम आज़ादी के अंदर जो हम जी रहे हैं, इन्हीं के त्याग से आज हमारा स्वातंत्र्य हम जो पाए, उनका इतना महत्व देना। और हम देख रहे हैं किस तरह अभी हमारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने से पूरा समाज का, उन समुदाय का मान सम्मान और गौरव ही नहीं, पूरा देश को एक संकेत, जो भी नेग्लेक्टेड थे, जो भी डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस थे, उनको आज मेन स्ट्रीम में लाना सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ही संभव हुआ। इतना ही नहीं, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, उनका जयंती जो 15 नवंबर को जो मनाया जाता है, वो भी स्वतंत्र सेनानी के नाते जो देश के हित के लिए जो जान कुर्बानी किए। मैं पहली बार मोदी जी सरकार ने उनको आज गौरव देते हुए उनका जयंती उत्सव पूरा देश भर में जनजातीय गौरव उत्सव के दिवस के नाते मनाना, इस क्योंकि ऐसे अनसंग हीरोज जितने भी हैं, वैसे लोगों को भी छोटे छोटे जातियां जो भी है लोग, उनका भी आज महत्व देना। आज हम पूरा देश भर में ट्राइबल सेक्शन जो है और उनके नाम पर, मैं जहाँ से आता हूँ तेलंगाना,
वहाँ तेलंगाना में भी इस बीच में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो मंजूरी दिया गया है, वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी मंजूरी देने के बावजूद वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम सम्मक्का सारक्का के नाम पर एक जो विश्वविद्यालय, उनके जो आदिवासी के संस्कृति हो, आदिवासी के जो संप्रदाय हो, उसमें एक कोर्स और उसका भी महत्व बढ़ाना, उनका भी मान्यता देना, ताकि हमारा जो कल्चर है ट्राइबल कल्चर, उनका भी आज जो सम्मक्का सारक्का जो है आदिवासी देवता जो हम मानते हैं, पूरा देश ही नहीं और बाकी देशों से भी इतना बड़ा संख्या में वो मानते हैं। उनका भी त्याग जो था, वो त्याग पूरा तेलंगाना ने पूरा आज आदिवासी मानते हैं। ये कुंभ मेला जैसा हर 2 साल को जो मनाते हैं, ये दक्षिण का कुंभ मेला भी मानते हैं। ऐसे चीज़ों को भी आज मोदी जी ने मान्यता देना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी मंजूरी देना और ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम भी सम्मक्का सारक्का के जात्रा, जो मेडारम जात्रा के नाते जो वहाँ बड़ा फेस्टिवल जो किया जाता है, अभी आने वाले दिनों में इस महीने में भी बड़ा एक त्योहार मना जा रहा है। पूरा देश भर से, सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड नहीं, कई राज्यों से बड़ी पैमाने से आते हैं। ऐसा महत्व देना मोदी जी से ही संभव हुआ। इसके पहले भी जैसे एससी कमीशन का और जो संवैधानिक दर्जा दिया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद भी जो एसटी कमीशन को भी पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने से उनका जो हक है, हक या आरक्षण जितने भी है, उनका कायम रखने के लिए अगर कोई भी उसका उल्लंघन किया तो ये जुडिशियल एक्शन लेने के पहली बार हमारा सरकारी जब एसटी कमीशन का भी एक संवैधानिक दर्जा दिया था। इस बीच में भी हम देख रहे हमारे मंत्री महोदय ने जो आदिवासी के लिए अच्छा, बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल आज चलाया जा रहा है, लगभग 401 नया एकलव्य मॉडल गुरुकुल स्कूल्स भी मंजूरी दिया और शुरू भी किया गया। 3958 वंदन विकास सेंटर्स भी आज मंजूरी दिया गया, ताकि लगभग 12 लोग आज ट्राइबल के उसमें भागीदार बन गए। इस तरह आज और अन्य छोटे छोटे जातियां जितने भी वो नेग्लेक्टेड थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे, आज ये सरकार आने के बाद उनके उत्थान के लिए कई निर्णय लिया जा रहा है। शिक्षा में हो, सरकारी नौकरी में हो, और उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी राष्ट्रपति ही नहीं, और आज एसटी के संख्या अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे एमएलए हो, चुने हुए एमएलए हो, और एमपी हो और एमएलसी हो, इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ये आज एसटी का आज महत्व दिया जा रहा है, संगठन में भी और सरकार में भी। इस तरह आज पूरा जो जातियां ऐसे छूटे हुए थे, आज जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन के बिल में भी पहली बार हम आज़ादी के बाद वहाँ के भी आदिवासियों को पहली बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है एसटी के नाम पे। आज जब भी चुनाव होते हैं, आज चुनाव के समय में पहली बार एसटी का भी आज रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। इस तरह लोकल बॉडीज में हो और हमारे एमएलएस एमपीस भी हो, ये संख्या रोज रोज जिस तरह आज बढ़ा जा रहा है, और कई राज्यों में छोटे छोटे का मांग भी है। ऐसा एक मांग है, 2 भी है, वॉशरमैन है, कई राज्यों में ओबीसी है, कई राज्यों में एसटी है, उनका भी आज मांग है कि हमारा भी ये एसटी का सूची में जोड़ने का मांग है। ऐसे लोग, ऐसे छोटे छोटे जातियों के भी आज हमारे सरकार में ध्यान देने के लिए मैं हमारे मंत्री महोदय से विनती करता हूं, क्योंकि इतने छोटे जातियों को आज महत्व मिलना इस बिल के माध्यम से आंध्रा में भी हो, उड़ीसा में भी हो, जो अब जातियां जुड़े जा रहे हैं। मैं सरकार को, हमारे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं, और खास तौर से मोदी जी ने इतना जो महत्व और ऐतिहासिक निर्णय जो लिया जा रहा है एसटी के माध्यम ट्राइबल के लिए, मैं अपनी ओर से धन्यवाद देके समाप्त करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर के लक्ष्मण जी। माननीय श्री एम सन्मुगम, 5 मिनट्स। Thank you, Chairman, sir. First of all, I thank the Honorable Minister to include the list of scheduled tribes on the recommendation of the Government of Andhra Pradesh and the Government of Odisha.
The tribal community is a very vulnerable community. Sir, on the basis of recommendation of the state government of Andhra Pradesh and after consultation with the Registrars General of India and the National Commission for Scheduled Tribes in the bill, it is proposed to modify the list of scheduled tribes in respect of state of Andhra Pradesh by amending the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 and to include tribes like Borja, Bonda Borja, Honda, Hond Borja, Paranjabridge, etc. Similarly, for the state of Orissa, Boya, Boyan, Bauria, Boyan, Baudi, Boyan are being included through the bill. Our party DMK is dedicated to the cause of social justice, and our great leaders Thandai Periyar, Perarinyar Anna and Kalaiñar Karunanidhi have all devoted themselves their entire life for the amelioration of the backward society, and because of their great movement we could have 69% reservation in our state. Sir, in this contest, our state government, headed by M.K. Stalin, have sent a recommendation to the union government for inclusion of Kurumanas community in the list of scheduled tribes for the state of Tamil Nadu. The Director, Tribal Affairs, already recommended and given the explanation on the basis of social structure, clan organization, life cycle, rituals, and the names of Kurumba, Kurumbar, and Kuruman are synonymously and identical with the Kurumanas. Various anthropological studies and observations reveal they belong to the same community, which is listed serial number 18 of ST list Tamil Nadu. However, unfortunately, this government has not taken any necessary action. I would demand that this community, which is the most backward and predominantly a tribal nomadic community, should be included in the ST list at the earliest. And one more point I want to explain this house. Sir, from one state to another, there are huge migration. Most of the migrations are scheduled tribes people only. Some of the states, they have listed in the scheduled tribes. Some of the states, that list is not there. So that tribal peoples can't get the tribal community certificate. Even in the same state also, they migrated from one district to another district, and they get married to somebody else also. So they are asking them to prove their community. So it is impossible for them to prove that also. So they are not get the community. Father is tribal, mother is tribal, but the sons and daughters are not getting the certificates. These are the problems should also be taken into account. I urge the ministry to solve those problems. Thank you, sir. Thank you, M. Sanmugamji. Manisri Niranjan VC, 2 minutes, 2 minutes. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. First of all, I welcome Government of India, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and our Home Minister Sri Amit Shah ji, and our beloved Ministry of Tribal Affairs Sri Arjun Munda ji for this historical bill. The Constitution SC/ST Order Amendment Bill 24 has been introduced in interim budget session by our Ministry of Tribal Affairs Sri Arjun Munda ji in the state of Odisha by amending the Constitution SC/ST Order 1950. Our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik had recommended for inclusion of 4 PVTG in their own name. They are Pauri Bhuya, Chuptia Bhunja, Bondo, and Mankidiyas. Our Chief Minister had also recommended for omitting 2 communities, Tamadia and Tamudia, from the list of scheduled caste. And our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik had also recommended for inclusion of communities
that have phonetic variation of the communities in the existing list of scheduled tribe. They are Durua, Bonda Poroja, Bonda Poroja, Bonda Poroja, Durua, Durua, Kuor, Konwar, Konwar tribes, and inclusion of Kui Kondho as a new sub-tribe, and Uram, Oram, Urao, Dhangra, Oram Mudi, and Barenga Jhodia, Poroja, Penga Poroja, Pengu Poroja, Celia Poroja as synonym of scheduled tribe Poroja. Likewise, Rajual, Rajuad as synonym of Sohoro as synonym of under Soboro community. So I thanks, I welcome, I congratulate our Prime Minister, our Home Minister, and our Chief Minister Odisha, and also our Sri Arjun Munda, Ministry of Tribal Affairs. Thank you. धन्यवाद माननीय निरंजन जी। माननीय श्री रायगा कृष्णैया, माननीय श्री रायगा कृष्णैया, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती ममता मोहंता जी, 3 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 में बोलने का मौका दिया। महोदय, आदिवासी को मूलवासी भी कहा जाता है। विश्व ब्रह्मांड आरंभ के समय के साथ आदिवासी समुदाय भारतवर्ष में है, जो प्रकृति के साधक है। जहाँ जाए तो इस समुदाय के लिए जंगल, जमीन और जल सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग आज भी अपनी मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। स्वाधीन भारत को 75 साल हो गया है। अब समय है उन लोग को उनकी हक दिया जाए, उनका परिचय दिया जाए, परिचय से वंचित वर्ग को आदिवासी मान्यता दिया जाए। महोदय, आंध्र देश की परजा, बंडो परजा, कंद परजा, परंगी परजा, सबरस, कपू सबरस, मालिया, कबरस, कंद सबरस एवं खोटा सबरस वर्ग को आदिवासी मान्यता देने का आवश्यकता है। ऐसे ही ओडिशा की हो सम्बलपुरी, साउरा, मुंडारी भाषा को संविधान 8वीं परिषद में शामिल करना चाहिए। ओडिशा की मयूरभंज जिला के पुराण, भंज पुराण वर्ग आदिवासी मान्यता पाने से वंचित है। आदिवासी की शिक्षा विकास क्षेत्रों में स्थापित एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल आवश्यकता से कम है। मेरे मयूरभंज जिला आदिवासी अध्युषित जिला है। आदिवासी संप्रदाय को शिक्षा क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए वहां प्रति ब्लॉक में यह स्कूल स्थापना करना जरूरी है। महोदय, कुछ आदिवासी वर्ग सरकारी मान्यता दिए हैं, लेकिन स्पेलिंग गलत होने के कारण ये वर्ग सुविधा सुजग से वंचित है। इसे पुनर्संशोधन करना जरूरी है। भूया, बॉन्ड परजा, मांकड़िया, तामुडिया, भूमिज, दरुआ, कन्नौर, ओराम, परजा, राजुआर, सौरा आदि संप्रदाय का स्पेलिंग भूल है। ओडिशा सरकार की रिकमेंडेशन के अनुसार अभिभक्त कोरापुट जिला में अवस्थित मुकादोरा, नुकादोरा, नोकादोरा और कोंडदोरा वर्ग को आदिवासी वर्ग में शामिल करना जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू। Dr. M. Thambidurai ji, 2 minutes, sir. And sir, I am very proud, and also, as our Shanmugam said, the Justice Party and Dravidian Party pioneers for reservation policy in India. 1926, Dr. Subbarayan was the Chief Minister at that time, that we were made a reservation, and also MGR, when the 69% he made the reservation for the OBC people and also scheduled caste people, and also then afterwards
Madam President Amma Jayalalitha made the constitutional to include amendment in 9th schedule. She helped that. That is our Dravidian party always for the backward class people for reservations. Sir. This is a pioneer. Then only India in the parliament have acted. Therefore, second, sir, I am going insisting, Minister Madam, to include Tamil Nadu fishermen. He is one of the people who are hunting people in the sea. There is a request, many times we are raising in the parliament to include these Tamil Nadu fishermen as also scheduled tribe, because that is demand for our former Chief Minister, Madam Jayalalitha, passed in the Assembly also, recommending that. And also other community, as Kurubas said, Sharma said, this also we are requesting Kurubas. Another important, Valmiki community. Valmiki community, if you take Karnataka, it is a tribal thing. In Tamil Nadu, it's not like that. Therefore, then if you take, for example, my place, Hosur, in Andhra also, they are discussing. This is a very, very important. It's a long demand by the Tamil Nadu people and as Andhra people to see the even Telangana people, to see that when Karnataka is the Valmiki people as tribal thing, it has to be included in the list. This has to be considered. Next, Madam, regarding the Baduga community, also in the Ooty, they are also requesting to include that. Then the Stone-cut Vaddas community, that is another community. That is also very, in Karnataka, there are tribal people. But in Tamil Nadu, that community also, like Valmiki, the Vadda community also, that is stone cutters, they are treated in Karnataka state as tribal people. But in Tamil Nadu, not like that. Why this concept? Because ST and ST, whoever living in India, throughout India, they have to treat it the same way. Why a discrimination? One state is tribal, another state, even the state governments are recommending. Because you cannot say Tamil Nadu not governmenting, as Kurubas we are recommending, the Valmiki community we are recommending these fishermen people, fishermen community also, and Baduga communities, the Ooty people. These are the communities are recommending, state government. They are considering, even committees also accepting, but the central government has to come forward. But I requested the Honorable Minister, many times our Minister, very sympathetic man from Orissa is coming. He knows about the Tamil Nadu fishermen. As a delegation, I met on behalf of them and requesting him to consider to include this tribal community. So once again, Madam, because our Dravidian movement, as our colleague said, we are the champions for the reservation for the OBC people and ST people, which enacted in Tamil Nadu, Madras province at that time. Therefore, we are none less anything behind that. Therefore, this is the high time to request the central government and also consider our request to include, as I said, Tamil Nadu fishermen, Kurubas community, and Valmiki community, and Baduga community, and the Odda community, all must be included, tribal community. I request Honorable to consider this on behalf of ADMK party and also my leader, Adapati Palaniswamy. I requesting to them consider this. Thank you. Thank you. Dr. Shantanu Sen. Thank you, respected Madam. While standing to speak on this bill, it really gives me pain when I recall that the respected President of India, who belongs to a tribal community, is not invited during the inauguration of this new parliament building or during the Pran Pratishtha in Ajodhya. This reflects how this government respects the tribal communities at large. I also recall in Madhya Pradesh, one BJP leader urinating on the face of a tribal person. This is very unfortunate. Sir, I once again thank you from my party and my leader, Madam Mamata Banerjee. I am here to speak on this bill. This amendment seeks to modify the list of scheduled castes and scheduled tribes in relation to Orissa. The modification of the list, a recommendation from the state to the center, scrutiny by the Tribal Affairs or Social Justice and Empowerment Ministry, and consent from the National Commission for SC and ST. I trust that the Commission have scrutinized this proposal adequately
and unconvinced of their merits. In 2011, the census said 8.6% of country's population was composed of tribal people, amounting to 10.4 crore people. I urge the government to conduct the 2021 census at the earliest, so that we can update our data and provide benefits to our most vulnerable citizens. These legislations being planned can't be based on a 10-year-old population data frame, madam. The gross enrollment ratio, that is GAR, of scheduled caste and scheduled tribe students at the undergraduate level, standing at 23% and 17.2% respectively, is very unsatisfactory, both numbers being short of the national average of 26.3%. The Central Education Institutions Reservation in Admission Act 2006 mandates 15%, 7.5% and 27% quotas for scheduled caste, scheduled tribe and OBC students. However, the acceptance rate of application for scheduled caste, scheduled tribe and OBC in IIM has been below 4%, most unfortunately. For the past 4 years, IIM Ahmedabad received 78 PhD applications from scheduled tribe students between 2018-19 and 2021-22, but only 2 have been accepted. IIM Bangalore, they accepted only 3 out of 188 applications submitted by scheduled caste, scheduled tribe and others. Only 2.5% or 137 scheduled tribe students out of 3430 eligible applicants were admitted across all the IITs in last year. There are 23.5% scheduled caste and 5.8% scheduled tribe of total population in my home state, West Bengal, madam. The educational situation of scheduled tribe communities also raised concern. According to 2011 census, it reports the scheduled caste and scheduled tribe literacy rate in India was 75.2% and 68.5%. That's for male, and for female, 56.5% for SC and 49.4% for ST. The West Bengal scenario, the SC and ST literacy rate in male is 84.5% and 74.15% in case of ST. And that for female, in case of ST, it's nearly 65% and for ST is nearly 44% respectively. 3 Santali medium schools at Keshpur, at Debra and Ghatal in West Mendipur district have been set up. Coaching is provided for joint entrance exam, NEET exam through 36 centers across the state, especially for the poor students belonging to SC/ST community. We have put in place an ST/ST pension scheme to take care of the vulnerable elderly in these communities. We have also established various lending programs, madam, to help grow entrepreneurship in these communities. To ensure holistic and sustainable development of Lodha Sabha communities in Jangal Mahal areas, the West Bengal Lodha Sabha Development Board has been formed. Bengal is the only state in India where, under the leadership of Madam Mamata Banerjee, our Honorable Chief Minister, the only lady Chief Minister of the country, a dedicated Scheduled Caste Advisory Council has been set up. That is our vision for the welfare of the scheduled caste, which is sadly not being mirrored at the union level, madam. Our constitution recognizes group identity and its importance for social empowerment and marginalized. Via these provisions, the constitution balances between the history of injustice faced by certain groups and personal liberty. People must be given an assertion of their group identity. Treating every person as an individual would not be sufficient to gain equality and equity for personhood, madam, as it will ignore their different life realities and caste and tribe identity, which require the protection of law. It is the duty of the state to ensure these protections to reach people in the best way possible in both letter and spirit. In our state of West Bengal, under the leadership of Madam Mamata Banerjee, there are 2 important schemes existing for these people. One is Joy Johor, one is Tapsali Bandhu.
cultural sector of this section of people has been tremendously improved by Madam Mamata Banerjee, our Chief Minister and our government. So your time is up, just sir. 30 seconds. Tribal board has been formed, and especially the eminent persons from these particular groups, they are being encouraged by several ways by our government. And lastly, I will conclude by saying there are few hill communities such as Bhujel, Gurum, Mangar, Niwar, Jogi, Khas, Rai, Shaniwar, Thami, Yaka and Dhimal. This need to be included in the list which has already been sent by our state government long back. My urge to the government will be kindly do the needful so that these groups also can be included. And finally, I will conclude by saying, if our government really wants to do something good for the scheduled caste and scheduled tribe community, keeping apart the ego, please come to our state of our West Bengal, take a lesson from our Chief Minister, Madam.